मैजिक लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है, पल में हंसी, पल में खुशी और पल में उदासी। लेकिन हम कभी तो लाइफ की दौड़ भाग में उलझ कर रह जाते हैं, तो कभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस में। इन्हीं सब के बीच हम उस मैजिक को तो फील ही नहीं कर पाते दैट लाइफ गिव्स अस। हमें कभी कभी ठहर जाना चाहिए, हर लम्हे का हिस्सा बन उसे दिल से जी लेना चाहिए, हर वो चीज़ महसूस करनी चाहिए that makes you happy, that makes you smile, and that makes you who you are. Yes, you are that little magic. Yes, you are that little sunshine. उसी लाइफ को जीने, उसी मैजिक को फील करने, I came up to a new destination, a beautiful paradise in India, South Goa. And on my very first Goa morning, I'm going to explore a location famous for its exceptional beauty and resilient calmness. So kindly watch the video till the end to feel the completely different vibes of Goa with me in Travel with Simran. So on our way towards the beautiful morning, we are going to Kola Beach. और ये रास्ता after taking a left turn 2 किलोमीटर का थोड़ा रफ रास्ता है. But we can go on this way by our scooties as it is feasible as told by the locals. So let's explore Kola Beach by this way. On this way towards Kola Beach, ये रास्ता थोड़ा steppy and stony है. So be careful while driving your scooties and be aware of the stones on the way. So drive safely towards Kola. So on the way towards Kola Beach, ये 2 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग रास्ता है and it's quite steppy stony जैसा कि मैंने बोला. But on this way एक भी ऐसा बोर्ड नहीं है that is going to let you know कि this way is going to Kola Beach. So kindly be in contact with the locals, ask them the way and reach safely to the beach. Till then we meet. Bye. की ऑफ रोडिंग के बाद में ये व्यू तो बनता है. एंड द ब्यूटिफुलेस्ट ऑफ द प्लेसेस, द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस ऐसे थोड़ी मिलती है. दिस प्लेस इज़ नॉट अ बिग लाइक बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे. दैट्स वाई इट्स पॉसिबल टू कम अप हेयर. और ये 2 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग ट्रैक हर सब की बात नहीं है. एंड दिस ब्यूटिफुल प्लेस इज़ वर्थ द ट्रैक. सो यू कैन सी द प्लेस. स्टैंडिंग ऑन द क्लिफ ऑफ कोला बीच एक ऐसी फीलिंग थी कि लाइफ कितनी खूबसूरत है यार. व्हाट आई डिमांड फ्रॉम लाइफ इज
peace. And for me, at that point of time, peace was being the part of the cool breeze flowing over the ocean, being the part of the sound the waves were making. बस यहाँ पे जैसे मैं ठहर सी गई थी, जैसे वो जगह मुझ में ही कहीं थी और मैं उस जगह में। यही तो था वो मैजिक that I was talking about, that life offers us. After feeling the vibes of the beach from the cliff area, it's time to go to the beach, which surely will have some other story to tell, some other emotions to feel, and some other magic to see. So let's go! So थोड़ा सा पैदल चलने के बाद there are stairs that are going to take you down to the Kola beach and it's quite okay. But ये जो नज़ारा हम देखने वाले हैं, it's definitely going to worth going through the off-roading via this place. और यहाँ के लोकल से मुझे पता चला कि यहाँ पे कायाकिंग भी होती है and a guy he told me कि कायाकिंग हम करवा देंगे. So let's go and enjoy the views over the Kola beach. ये स्टेयर्स हमें लेके जाती है कोला बीच पे, जैसा कि मैंने बताया, एंड फ्रॉम हेयर मैं थोड़ा थोड़ा बीच देख सकती हूँ एंड इट इज़ ब्यूटिफुल. द वे आई एम क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स, मेरा एक्साइटमेंट इस बीच के लिए और बढ़ता जा रहा है बिकॉज द व्यूज इट्स कमिंग नियर बाय मी. आई कैन फील हियर द सी वेव्स लाइक और भी ज़्यादा फास्ट से. एंड वी आर गोइंग टू रीच दिस मैजिकल प्लेस. ओह 1 2 and 3. This place is beautiful. Stay for a while and I'll be here when you're back again. And all this time I was right where I stand. Thought I had to search for another was right here, my best friend. Thought he'd be someone else, but it would take me a while. Stayed for too long and I woke up at your place again. So there is a small lagoon at this place called like Kola beach पे. ये बहुत ही खूबसूरत सा lagoon है and we are going for kayaking out there. It's famous for this place. I hope I'll enjoy the kayaking as well as you people. हम लोग kayaking के लिए जा रहे हैं अभी and that person over there, that guy, he's making the kayaking boat ready for us. So let's have a trail of kayaking in Goa at Kola beach. पानी कम है, ज़्यादा होता है इससे. हाँ, अभी बढ़ रहा है, इतना होगा. ओके, तो अभी इसमें कायाकिंग हो जाएगी इजीली. हाँ. कैसे करनी होती है? कौन वहाँ पे हाईवे पर? हाँ, हाईवे से लेफ्ट टर्न लेते हैं ना वो जो. मेरे को दिख लो तो. जाओ अंदर. ये छोड़ना मत हो. राइट मारा तो लेफ्ट की तरफ. ओके. अपोजिट. ठीक है. और कई साइड में पत्थर को भी लगाना. हाँ? तो ऐसे रिवर्स करना होगा. ऐसे रिवर्स रिवर्स कैसे होता है? ऐसे पानी को आगे. अच्छा, पानी को आगे. ठीक है बॉस, बताना आता ना, लेकिन वो बच जाए तो.
सो राइट नाउ मैं कायाकिंग कर रही हूँ एंड थोड़ा डर भी लग रहा है, बट इतनी शांति है कि मुझे सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देती है. आई कैन हियर द वर्ड्स स्केपिंग, द वाटर स्प्लैशिंग और बीच का वो साउंड. ओह, आई वॉन्ट यू पीपल टू हेयर कि यहाँ की आवाज़, मतलब लेट्स हियर द नेचर. नेचर के इतना पास. A must go for experience is kayaking. I can feel the sound, I can feel the nature, I can feel the magic. Oh. इतने सारे कोकोनट ट्रीज के बीच में this blue lagoon is feeling like ऐसे भी कोई जगह इंडिया में है. And this is so much pure. So, after having the shots at the beach, Kola Beach, one of the beautiful beaches I've ever witnessed, and मैं यहाँ पे morning time में आई हूँ, and I would like specifically prefer you all to come to this beach in the morning time, as यहाँ पे थोड़ा rush कम रहता है. You can experience kayaking, as well as the cafes are also out there, restaurants are also out there. So I've ordered something to eat from this Blue Lagoon restaurant. Breakfast is here, and tasty. Chai bhi hai. Also good. But with this beach view, the breakfast becomes more tastier. पे मैं एक दूसरे एंड पे आई, एंड दैट इज मोर ब्यूटीफुल दैन द फर्स्ट एंड. लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कोला बीच, इस पॉइंट पे इट्स लाइक ब्लैक स्टोन्स आर देयर, बिग स्टोन्स, एंड इट इज़ अ फोटोजेनिक पॉइंट फॉर कोला बीच. और यहाँ पे भी वेव्स उतनी ही ज़्यादा है, लाइक द हाई टाइड्स आर क्वाइट ब्यूटीफुल. सो यू मस्ट, इफ़ यू आर विजिटिंग कोला बीच, देन इसके दूसरे वाले छोर पे ज़रूर आना. इट्स मोर ब्यूटीफुल, एंड इवन lesser people are here as compared to the main beach. With this, bye. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say say